Madrid 1902, the night of 5th March, when the people of Madrid went to sleep. उन्हें पता ही नहीं था कि जब अगले दिन वो उठेंगे तो उनके शहर का फ्यूचर पूरी तरह से बदल चुका होगा। इस शहर को पता ही नहीं था कि इसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। Right about here, in 1902, a small team called Sky was born, or as we now know them as Los Blancos. मड्रिड के इंस्टीट्यूशन लिब्रे दे एंसिन्यान्जा के कुछ ऑक्सब्रिज ग्रेजुएट्स ने 1897 में एक क्लब बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा स्काई। यह क्लब 1900 में दो पार्ट्स में स्प्लिट किया गया, न्यू फुटबॉल दे मड्रिड और मड्रिड फुटबॉल क्लब। 6 मार्च 1902 को जुआन पाद्रोस को मड्रिड फुटबॉल क्लब का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। The iconic white color shirt of Real Madrid was chosen to be kept as white in the honor of a famous English team, Corinthian FC, जिससे जुआन पाद्रोस मिले थे on one of his trips. उस टाइम का नेशन वाइड कॉम्पिटिशन सिर्फ कोपा डेल रे हुआ करता था एंड मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने वो लगातार 4 बार जीता। 1907 में कैथोलिक प्रीस्ट्स फ्रॉम रॉयल इंग्लिश कॉलेज इन वैलाडोलिड के अगेंस्ट 6-2 हारने के बाद future club president Santiago Bernabeu was quoted as saying in 1957 that the game changed the whole history of football in Spain by showing us how football should be played. Finally 1920 में क्लब का नाम चेंज करके रियल मैड्रिड किया गया आफ्टर किंग अल्फोंसो द 13th ने क्लब को रियल which means रॉयल इन इंग्लिश का टाइटल दिया। 1929 में जब लीग स्टार्ट हुआ तब रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना के पीछे सेकंड फिनिश किया। उसके बाद उन्होंने 2 बार लगातार लीग टाइटल जीता 1930 से 1932 के बीच में। सेकंड स्पेनिश रिपब्लिक के आने की वजह से 14 अप्रैल 1931 में रियल मैड्रिड से रियल का टाइटल छीन लिया गया एंड वापस मैड्रिड फुटबॉल क्लब बना। लेकिन 13 जून 1943 को जो हुआ उसने पूरे फुटबॉल को बदल दिया। It was the first actual El Clasico. It was at Les Corts जहां बार्सिलोना ने कोपा डेल जेनरलासिमो सेमीफाइनल्स में रियल मैड्रिड को फर्स्ट लेग में 3-0 हराया था। मैड्रिड ने तीनों गोल्स के बारे में कंप्लेन किया था जो रेफरी फॉम्बोना फर्नांडिस ने अलाउ किए थे बार्सिलोना के लिए। बार्सिलोना के फैंस ने मैड्रिड के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा विसल किया था, whom they accused of employing rough house tactics, and Fombona for allowing them to. The newspaper Ya reported the whistling as a clear intention to attack the representatives of Spain. बार्सिलोना फैंस को इसी वजह से बैन कर दिया गया था from traveling to Madrid for the second leg. On the day of the second leg, बार्सिलोना टीम की बस पे स्टोन्स फेंके गए जैसे ही उनकी टीम बस होटल से बाहर निकली। बार्सिलोना के उस टाइम के स्ट्राइकर मारियानो गोंजाल्वो का कहना था 5 minutes before the game had started, our penalty area was already full of coins. The goalkeeper of Barcelona, Luis Miro, rarely अपने पेनल्टी एरिया के बाहर निकल पाए एंड जब निकलते थे तो उन पे स्टोन्स फेंके जाते थे। रियल मैड्रिड 2-0 अप थी विद इन जस्ट हाफ एन आवर। जो थर्ड गोल था उसके बिल्डअप में बार्सिलोना के बेनितो गार्सिया को रेड कार्ड शो कर दिया गया था फॉर अ टैकल विच फ्रांसिस्को कैल्वे सेड
was a completely normal tackle. Madrid के Jose Llopis Coronia ने बोला कि at this point they got a bit demoralized. बार्सिलोना के एंजल मुर ने बताया कि at this point we thought go on then, score as many as you want. Madrid ने फिर 31st, 33rd, 35th, 39th, 43rd and 44th मिनट्स में गोल्स मार के स्कोर को 8-0 कर दिया. 2 गोल्स को ऑफसाइड भी दिया गया था एंड मैड्रिड ने सेकेंड हाफ में 3 और गोल्स मार के स्कोर को 11-0 कर दिया बिफोर बार्सिलोना scored a late consolation goal and the match ended at 11-1. A famous sports administrator of the time, Juan Samaranch, wrote, "In that atmosphere and with a referee who wanted to avoid any complications, it was humanly impossible to play. If the Azulgranas had played badly, really badly, the scoreboard would still not have reached that astronomical figure." The point is that they did not play at all. According to football writer Sid Lowe, there have been relatively few mentions of the game, and it is not a result that has been particularly celebrated in Madrid. Indeed, the 11-1 occupies a far more prominent place in Barcelona's history. This was the game that first formed the identification of Madrid as the team of the dictatorship and Barcelona as its victims. Fernando Arguila, बार्सिलोना के रिजर्व गोलकीपर फ्रॉम द 1943 मैच ने कहा था देयर वाज नो राइवलरी, नॉट एट लीस्ट अंटिल दैट गेम, एंड दिस इज हाउ द एल क्लासिको वाज बॉर्न. इसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग रियल मैड्रिड बिकॉज देन came the famous 5 consecutive Champions League wins that every other club is jealous of. It was time for the Bernabeu Era. – 1943 में प्रेसिडेंट बनने से पहले सैंटियागो बेर्नाबेउ ने ऑलरेडी कैरी आउट कर दिए थे सारे फंक्शंस एज अ प्लेयर, एज अ फर्स्ट टीम कैप्टन, एज अ क्लब मेंटेनेंस, फर्स्ट टीम मैनेजर एंड द डायरेक्टर in an association with the club that would last nearly 70 years. He was responsible for rebuilding the club after the Civil War and उन्होंने oversee की थी the construction of Santiago Bernabeu Stadium and the Ciudad Deportiva. Bernabeu ने reorganize किया क्लब को at those levels जो आगे चल के normal operating hierarchy बने professional clubs के लिए. And this included giving every section and level of the club independent technical teams and recruiting staff. Moreover, Bernabeu के अंडर 1950s में former Real Madrid amateurs player Miguel Malbo founded Real Madrid's youth academy known as La Fabrica. Finally, in 1953, Bernabeu embarked upon a strategy of signing world-class players from Spain and abroad, and उसमें से सबसे prominent थे Argentine Alfredo Di Stefano, and during Bernabeu's presidency, many of Real Madrid's most legendary names played for the club, including Di Stefano, Ferenc Puskas, Francisco Gento, Hector Real, Raymond Kopa, Jose Santamaria, Miguel Munoz, Amancio, and Santillano. And it was under Bernabeu's guidance that Real Madrid ने खुद को establish किया as a major force both in Spanish and European football. Bernabeu ने 35 years तक presidency hold की Real Madrid की, and within that time उन्होंने एक Intercontinental Cup, 6 European Cups which included the famous 5 consecutive European Cups from 1955 to 1960, then 16 league titles, 6 Spanish Cups, 2 Latin Cups and एक Copa Eva Duarte जीता. एंड अब जो टाइम आने वाला था वो टाइम था स्लॉगिंग का. After the passing away of Santiago Bernabeu, Raimundo Saporta called for the elections. In this, the club's treasurer Luis de Carlos resigned in order to run for president, and he submitted 3,352 documents endorsing his candidacy. While the rest of the people who were standing for the elections, Campos Gil and Jose Daguerre, did not get the minimum number required in time. 4th June 1980 को Santiago Bernabeu Stadium में कोपा del Rey फाइनल होस्ट किया गया between Real Madrid and Real Madrid Castilla. Real Madrid Castilla क्लब की सेकेंड टीम थी which was initially founded on 21st July 1972.
कस्तिया ने 4 फर्स्ट डिवीजन टीम्स को हराकर यहाँ पे पहुंचा था, हरक्यूलिस, एथलेटिक बिल्बाओ, रियल सोसिएडाड एंड स्पोर्टिंग द गील, और इनको हरा के वो फाइनल्स तक आए थे। रियल मैड्रिड ने डिफीट किया कस्तिया को 6-1 उस साल एंड कोपा डेल रे जीता। लेटर उसी साल में फ्रांस फुटबॉल मैगजीन ने रियल मैड्रिड को बेस्ट यूरोपियन टीम का टाइटल दिया इन 1980। The 1980-81 season had an unpleasant finish for Madrid. 26th April 1981 को they lost the league title when the victory chant was already being sung in Valladolid. Real Sociedad ने ड्रॉ किया 2-2 against Sporting de Gijón in the last minute and they claimed the title. एक महीने बाद 1981 के यूरोपियन कप फाइनल में 27 मई को एलन कैनेडी के गोल की वजह से लिवरपूल ने यूरोपियन कप टाइटल जीता मैड्रिड को हरा के। 1982 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल भी सैंटियागो बर्नाबेउ में हुआ था, जहां इटली ने वेस्ट जर्मनी को 3-1 हराया था। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन द होराइजन होने की वजह से लुइस दे कार्लोस ने अल्फ्रेडो डी स्टेफानो एंड अमांसिया ओमारो को फर्स्ट टीम और कस्तिया के मैनेजर्स के रूप में लाया। डी स्टेफानो ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एंड हिज फर्स्ट सीजन इन चार्ज इज बेस्ट रिमेंबर्ड बाय द बिजार फैक्ट ऑफ 5 ट्रॉफीज क्लोजली लॉस्ट, 4 of them in 4 finals: Super Copa, European Cup Winners' Cup, Copa del Rey and Copa de la Liga. उन्होंने 4 फाइनल्स उसी साल लूज किए थे। On 12 December 1984, Emilio Butragueño became a European household name with an unforgettable performance against Anderlecht at the Bernabeu. Real Madrid's first 2 UEFA Cup titles were won back to back, the first in 1985 against Hungary's Videoton and the second over FC Cologne in 1986. अब टाइम शुरू हुआ La Quinta del Buitre का। This was the name given by Spanish sports journalist Julio Cesar Iglesias to the 5 homegrown Real Madrid players who were at the core of the team that dominated the Spanish football in the 1980s. The name meaning Vulture's cohort. इसके अंदर जो 5 Real Madrid players थे वो थे एमिलियो बुत्रागिनियो, मनोलो सांचेस, मार्टिन वास्केस, Michel and Miguel Pardeza. With La Quinta del Buitre, Real Madrid had one of the best teams in Spain and Europe during the second half of the 1980s, winning amongst others 2 UEFA Cups and 5 Spanish championships in a row. इनका जो रिकॉर्ड था was only blemished by a failure to win the European Cup, and that was against a Milan side of that time, which was a far superior side. लोरेंजो सांज के प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने फैबियो कैपेलो को न्यू हेड कोच ऑफ रियल मैड्रिड इलेक्ट किया, बट फैबियो कैपेलो ने 1 साल बाद रियल मैड्रिड छोड़ दिया बिकॉज वो सेटल नहीं कर पाए मैड्रिड में। कैपेलो को रिप्लेस किया जर्मन यूप हाइकीज ने, who led the team to win the much awaited Champions League, but after winning the Champions League he was fired at the end of the year, replaced by Jose Antonio Garnacho, who himself resigned just months later in July. Vicente del Bosque के अंडर रियल मैड्रिड ने अपना अगला चैंपियंस लीग जीता, which was the first ever Spanish final, pitting Madrid against Valencia on 24th May 2000. जो गेम था वो मैड्रिड ने 3-0 जीता comfortably with a goal from Raul as well. Real Madrid was being considered as past its glory, but now it was time for something which changed the entire footballing world, which brought laurels to Real Madrid which no one could have ever thought about. It was time for the Galacticos. It was time for the Perez era to begin. In July 2000, Florentino Perez को इलेक्ट किया गया as the club president and he vowed to erase the club's debt and modernize the club's facilities. Though उनका primary electoral promise was the signing of then Barcelona star Luis Figo. July 16th को Perez won the election and as said, 8 days later Real Madrid ने sign किया Luis Figo को, who was presented as the number 10 for the club. Expectations बहुत high थे as Los Blancos began the 2000-2001 season with the possibility of winning 5 trophies. लेकिन रियल मैड्रिड पहले ही टेस्ट में फेल हो गई after they lost the 2000 UEFA Super Cup by a score of 1-2 to 2000 UEFA Cup champions Galatasaray. Later, an injury to Fernando Morientes left Real Madrid without a centre forward, but manager Vicente del Bosque ने improvise किया
by using Guti in the role, with Real Madrid coping and making good start to both their domestic and European campaigns. Real Madrid को लेकिन बार्सिलोना ने 2-0 हराया at the Camp Nou and वो Copa del Rey में भी बाहर हुए by a side called Toledo. They even lost the Intercontinental Cup final to a Boca Juniors side led by Martin Palermo and Juan Roman Riquelme. Real Madrid को उस साल बायर्न ने बाहर किया चैंपियंस लीग से, लेकिन with brilliant performances from Raul and Guti, they won the 28th league title for Real Madrid. Real Madrid ने ज़िनेदीन ज़िदान को साइन किया 2001 में, रोनाल्डो को 2002 में एंड डेविड बेकहम को 2003 में, और इनको मीडिया ने बुलाना शुरू किया लॉस गैलेक्टिकोस. रियल मैड्रिड ने 2002 चैंपियंस लीग एंड 2002 इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता, followed by the league title in 2003, but after this, the club failed to win a major trophy for the next 3 seasons. After the major losses in the 2005-2006 season, Florentino Perez had to resign from the president's position and Ramon Calderon was elected as the club president. This did not change the fate of the club much. इसी बीच 4 बार मैनेजर्स चेंज हुए and we saw the signings of Sergio Ramos, Marcelo and Higuain. Ronaldo left for Milan. David Beckham joined LA Galaxy and Fernando Morientes left for Monaco, who later defeated Real Madrid in the Champions League the next season. However, Real Madrid won a hard-fought title after 2003 in the 2006-2007 season after a great performance by the entire team of the time. On 9th December 2008, it was announced Bernd Schuster had been sacked as a manager and the ex-Tottenham Hotspur manager Juan de Ramos would replace him. That season ended up being one of the most disastrous in the club's history. Real Madrid was knocked out of the Champions League at the round of 16 for the 5th time in a row, losing to Liverpool 0-5 on aggregate, crashed out of the Copa del Rey to third-tier side Real Union, and was embarrassed by Barcelona at the Santiago Bernabeu with a humiliating 6-2 loss, which all but confirmed the league title for Barcelona that went on to win the treble. Madrid then lost their final 4 league games to cap off the disastrous campaign. The future was looking bleak and there was no hope of success. सब लोग मान चुके थे कि एक बार फिर रियल मैड्रिड इज ओवर. दे आर पास्ट देयर प्राइम एंड अब कुछ नहीं बचा सकता इन्हें. उस टाइम पे वापस फ्लोरेंटिनो पेरेज को इलेक्ट किया गया एज द क्लब प्रेसिडेंट. From the depths of despair and from a position of hope, Real Madrid और उनके फैंस looked up to a certain someone. एक इंसान था जो इस पूरे क्लब का फ्यूचर बदलने वाला था. एक इंसान था जो इस क्लब को वापस रियल मैड्रिड, रॉयल मैड्रिड बना सकता था. In 2009, Real Madrid signed Uno, dos, tres.